Hello and welcome to Aryabhata Ashram. I'm Maheep. We are doing very important session called as next year question NYQ. They are primarily based on like-minded previous year question and on lot of content and concept. The questions repeat, the idea repeat, and that is what we are going to tell you in this video. We have to evaluate using contour integration 0 to 2 pi d theta upon a plus b cos theta का whole square. अगर मैं आपको कहूँ कि आई कैन गिव यू आंसर स्ट्रेट अवे, तो डोंट बी सरप्राइज्ड, इसका मैं आंसर 1 मिनट में लिख सकता हूँ. 2 पाई a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 3/2. तो आपको मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है, यूनिट सर्किल पे मैं 0 से 2 पाई डी थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, तो दिस इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोवाइडेड मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ b. करेक्ट. तो ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो इसी के फंडामेंटल्स पे मैं तुरंत आर्ग्यू कर सकता हूँ कि आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क आउट. नाउ व्हाट आई डू, आई डिफरेंशिएट दिस इंटीग्रल with respect to a. So this is 0 से 2 pi minus of d theta a plus b cos theta a whole square. Now this can be written as 2 pi a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू माइनस हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2. एंड माइंड यू 2a हैज टू बी मल्टीप्लाइड. ठीक है, देखिए ये 2 कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया. ऑल दीज कॉन्सेप्ट आई यूज इन कैलकुलस एज वेल. So this is nothing but 2 pi a upon a square minus b square to the power 3/2. तो ये मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया. ठीक है, तो अगर यूपीएससी इसमें a और b का कुछ भी वैल्यू देता है तो यू विल बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके, नाउ दिस इज हाउ यू हैव इंश्योर्ड द सैंक्टिटी ऑफ द आंसर. सो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है क्या कि 0 to 2 pi d थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दो तरीके से बताया था, एक तो कॉस थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट करके tan थीटा को t पुट करके उसको मैं tan इनवर्स में फंक्शन बना के ये लाऊंगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके. दूसरा तरीका क्या बताया था, कॉस थीटा को e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा बाई 2 और e टू द पावर i थीटा को z लेना है, dz क्या हो जाएगा, accordingly you will be working out. ठीक है, so let us try to do this question and we have known the answer. Okay, so let us try to do this question and prove it is so. So first of all, what I will do on a unit circle, I will write what cos theta is equal to e to the power I theta plus e to the power minus I theta by 2, which is z square plus 1 by 2z. So this can be written as, now d theta can be written as dz upon 1 by z. Okay, now this is your a plus b into z square plus 1 2z का whole square. So I can be written as 0 से c dz iz. Now this can be written as 2a z प्लस b जेड स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर. अब ये 2 इधर क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 4, सो दिस इज योर 4z स्क्वायर, दिस इज योर 4z स्क्वायर. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 4 अपॉन आई जेड, बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, जेड स्क्वायर 2a बाई बी z plus 1. Okay, so this can be written as ये b स्क्वायर हो गया एंड दिस इज योर z. तो ये जो है इट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, इट हैज 2 रूट्स बट इट इज हैविंग
repeated twice. The poles are double. Now I will find out the alpha beta other roots. Okay. So if I want to find out alpha beta, 4a square upon b square minus 4 upon 2. So these are the alpha beta roots. So this is your minus a by b plus minus under root of a square by b. तो इसमें मैं देखता हूं कि अल्फा जो है वो लाई कर रहा है inside the unit circle. Okay, so this lies inside unit circle is equal to 1. लेकिन बीटा जो है वो लाई नहीं कर रहा है because this is the case. So why? Because alpha beta is 1 and mod of beta is greater than 1. Therefore, this is less than 1. Okay, so you can see these things. Now I can write this 4 upon IB square, isn't it? And since this is a double pole, so I have to differentiate this. So this is the function. So only alpha lies. So what I will write, you see here, it is 4 upon IB square. It is 4 upon IB square. Four upon IB square. And what I have? Z upon like this, and I have only alpha. So what is the residue? Because residue at z is equal to alpha, that means you have to find limit z tends to alpha d by dz of z upon z minus beta ka whole square. Okay, and mind you, 4 and upon IB square I will write later onwards. So this is nothing but, you can see here, this is z minus beta ka whole to the power 4, z minus beta ka whole square minus 2 times z into z minus beta. So this is the thing. Now z minus beta is taken common upon z minus beta to the power 4. Now this can be written as minus of z plus beta z minus beta to the power 4, and I have to put z is equal to alpha. Now this is what I get. So I get this as minus of alpha plus beta upon alpha minus beta to the power 3. Okay. Now if I substitute this value, then what is this? If I substitute this value over here, 4I b square. Now what is alpha plus beta and alpha minus beta? This is the big thing. So I can see here that alpha plus beta is nothing but minus 2 a by b. Alpha minus beta, what is it? 2 times a square minus b square upon b. So this is the thing. Okay. So you can substitute this value over here. तो ये क्या है? Minus 2a upon b. This is 2 under root a square minus b. ठीक है? So I'm going to write down the residue. So 2 pi I, mind you, this is 4 upon IB square, and now this is minus of this. And what about this value? This is minus 2a by b. What about this value? 2 under root of a square b to the power 3. So this is the answer that we should be getting it. तो आप देखिए इसमें आई कट जाएगा. So this is how much? 2 into 4 into 2 into pi.
So this is A, this is B square. Okay, so this is your BQ. तो इसको क्या हो जाएगा 8 A square minus B square to the power 3/2, and now this is B cube. So B cube get cancelled. Okay, and 8 get cancelled. So what do I have? I have 2 pi A upon A square minus B square to the power 3/2. So this is the answer to this question. Okay, so what I did was simply that I have now multiple poles. So z is equal to alpha is repeated twice. So I have to find the residue at z is equal to alpha only because beta lies outside. So earlier questions where we had simple poles, now we have double poles. So here also we introduce this concept, and you can see how I have found out this answer. And as I already prophesied you in the beginning, that answer is 2 pi a upon a square minus b square to the power 3/2. तो ये क्या है? This is nothing but your observation. This is what? This is observation which I held at the initially. How I have done this. This is very central to your understanding, because if you will do something which you did in calculus, then you can very well understand. So देखो calculus से मैंने आपको पहले बताया था कि this is the result that should go into your formula sheet. Okay, and I have partially taken derivative with respect to a. तो इसका भी आंसर क्या आ जाता है? 2 pi a upon a square minus b square 3√3. Now I give you a very quick question which is asked in UPSC. That is, ये यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, आप इसको मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा. ठीक है, तो ये अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट मींस यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस. नाउ गिवन दिस, बिकॉज दिस इज ऑन यूनिट सर्कल, तो मैं क्या करूंगा, इसको यूनिट सर्कल पे हाफ बनाऊंगा. ठीक है, तो इसका आंसर आई कैन गिव यू वेरी वेल. ये क्या है? 2 पाई ए क्या है? 1 है, अपॉन क्या? 1 माइनस 1/4 टू द पावर 3/2. तो 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पाई. ओके, 3/4 टू द पावर 3/2. ओके, so you can very well write this. So this is 4 to the power 3/2 and 3 to the power 3/2 into pi. So 2 square to the power 3, this is 3√3. तो ये क्या हो गया? 8 pi upon 3√3. तो मैं आपको सबसे पहले क्या बता दे रहा हूँ? आंसर ही बता दे रहा हूँ, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस इफ यूपीएससी इज आस्किंग यू, then it is not a big deal if you have done practice, if you have taken everything in your stride, if you have worked in that direction. ठीक है, so this is how we are going to do these questions, and this is central to your preparation. Please see to it how I have worked these questions. Okay, so that is the main idea behind these such questions. Okay, so till then, goodbye. Always think that math is about practice. The more you do, better it is. Thank you.